Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is acceleration. Acceleration means rate of change of velocity. Acceleration means this is a change of velocity. Many students write, what they write? They write v upon t. Acceleration is v upon t, which is not right. This is wrong. You should not write v upon t. It should be a change. Change in velocity means, let me explain it with an example. How we write acceleration as a change in velocity. Now, let us consider a motion where you can say a car is moving and it starts its motion from here. Suppose it starts its motion from here, and then it moves like that and reaches this point. Up to here. So, with the starting point of motion, this is your starting point of motion, and it starts gaining a velocity. And it's the end of the motion where it reaches the end of its velocity. That is, here it is possessing, body is possessing final velocity, here it is possessing initial velocity. So, initial velocity of a body, initial velocity of a body is u. Here t is equal to 0. T equal to 0 doesn't mean, इसका ये अर्थ नहीं होता है that time is over at 0 here. No. It means you start observing your motion from this point. T equal to 0. Initially, velocity is u, and final velocity of an object, of a body. Here it is a car. It can be anything, whichever body you take into consideration. Here now it is v, that is at time equal to t. Now, change in velocity, it is a simple rule, that is final minus initial. Final minus initial. That is final velocity minus initial velocity. Why I am putting arrow over here? That is velocity, here u. Why I am putting arrow? Arrow indicates that it is a vector quantity. So make it a habit, students. Whenever you write velocity, acceleration, these things, put an arrow. Now, rate of change of velocity. इसे आप rate of change of velocity भी बोल सकते हैं. Change in velocity, you can also say change in velocity per unit time, and it comes out to be v minus u upon t. This is rate of change of velocity, change in velocity per unit time. You can also say like that. And we know rate of change of velocity is known as acceleration. So here it comes. Acceleration is equal to v minus u upon t. So, it is also a vector quantity, as it involves two vector quantities. Secondly, it is always a change. If you write change in velocity, then it is right. If you write velocity upon time, that will be wrong. So, it is a change. Now, what are the units of acceleration? Units of acceleration is, that is change in velocity. So, change in velocity is also a velocity. अगर दो similar quantities को हम minus कर रहे हैं, तो velocity will only, the outcome will be velocity only. That is, units of velocity is meter per second and unit of time is seconds. Now it comes out to be ms minus 2, because here the power is 1. When it goes in numerator, again the power becomes minus 1. So it is ms minus 2, or you can also write meter per second square. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. You can write it like that, this way also. So, this is your acceleration. Now, as motion is there and body is moving along the direction of motion, as I have given the example of this, कि एक body कोई direction of motion में move कर रही है. So, there arises two cases of acceleration, that is positive acceleration, negative acceleration, and one special case that we'll also discuss, that is zero acceleration, when acceleration will be zero. I'll let you know that also. First of all,
वी शुड नो व्हाट इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन है तो चेंज तो होगा ही होगा, ठीक है। लेट मी राइट वेट, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव, it means there is change, definitely there is a change in the velocity, but in the direction of motion. Suppose here again we consider a car, again in the direction of motion, moving like that, it's in constant motion. So when the direction of motion is here, direction of motion of car, direction of motion of car means velocity is changing in the direction of motion. यहां पे क्या बोलेंगे, velocity is changing in direction of motion, velocity is changing in direction of motion, in direction of motion, this is there. अब कैसे चेंज हो रही है, it's increasing, you can also write, or you can also write velocity is increasing with time in the direction of motion, then acceleration is said to be positive acceleration. Positive I have written plus v, positive acceleration, or if you want to write full, you can write like that, positive acceleration. Means direction of acceleration is also same. Direction of acceleration क्यों कह रहा हूं मैं, why I am saying direction of acceleration, because direction of change in velocity. अब change in velocity क्या होता है, change in velocity होता है acceleration. So direction of acceleration and direction of motion, then it has a positive acceleration. Got it? Now what is negative acceleration, ये आप अपने आप कर सकते हैं. नेगेटिव में क्या आएगा, velocity is changing in opposite direction to the direction of motion. वहां पे opposite direction में change होगा, और you can say velocity is decreasing with time in the direction opposite to the direction of motion. Let me tell you this thing. It means कि वो गाड़ी opposite नहीं चलेगी. It means there is certain other thing happening. Let me make it more clear to you people. What is negative acceleration? Suppose here the motion starts, here it reaches. Now what is negative acceleration? How you can depict it pictorially? Direction of motion is like that. Here it is the direction of motion, and here direction of acceleration. Means what happened? Actually क्या हुआ है, जो फर्स्ट केस था उसमें क्या था, जो फाइनल वेलोसिटी थी that was greater than the initial velocity. अब यहाँ हो क्या रहा है, फाइनल वेलोसिटी इज बिकमिंग लेस देन इनिशियल वेलोसिटी. वो कब होगी, वो तब होगी अगर हम गाड़ी में ब्रेक्स अप्लाई करेंगे या गाड़ी को अचानक से रेस्ट पे ले आएंगे. व्हाट विल हैपन व्हेन ब्रेक्स विल बी अप्लाइड, व्हाट विल हैपन, वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी बिकम्स लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, एंड डेफिनेटली द वैल्यू विल बी, अगर आप इसे मैथमेटिकली देख लीजिए पहले, a is equal to v minus u upon t. Now v is less than u. Suppose if v is less than u, any numerical value, suppose it is 10 and it is 12. 10 minus 12 is minus 2, that is negative. So here the acceleration becomes negative, and when acceleration becomes negative, we call it a negative acceleration, or the other name for it is deceleration or retardation. It all thing has same name. Deceleration बोल सकते हो, negative acceleration बोल सकते हो, और retardation भी बोल सकते हो. So इसकी definition फिर क्या बनेगी? Now we have seen the example also. It's the same thing. When the velocity of body changes
in direction opposite to motion, or you can write when the velocity of the body decreases with time. Velocity of the body decreases with time in direction opposite to direction of motion, then body is having negative acceleration. Body is having negative acceleration. Or simply you can say, जब मोशन होगा opposite direction of motion ऐसी होगी, direction of acceleration is opposite to direction of motion, then also you can say it is a negative acceleration. Now we will study when the acceleration will be zero, and is it possible to have acceleration if speed of an object is constant? Let's see. Now I am saying when acceleration will be zero. Acceleration will be zero. It can be two cases. या तो बॉडी रेस्ट पे है, चल ही नहीं रही है, बॉडी एट रेस्ट. ठीक है, नो मोशन, मोशन इज नॉट देयर. ठीक है, दैट वी आर नॉट नाउ डिस्कसिंग दैट केस. Still body is moving and still we are saying acceleration is zero and body is in motion. Body is in motion. When it will happen? You know from the formula, acceleration is v minus u upon t, as we have discussed. अभी हमने शुरू में डिस्कस किया था ये फॉर्मूला. So when acceleration can be zero, while looking it at mathematically, when you look at this thing, what you will depict? आप क्या सोचोगे? Acceleration कब zero होगी? When final velocity and initial velocity. Final velocity is equal to initial velocity. जो initial velocity थी, final velocity भी वही है, same रहे. Then now you put it. So when these two terms are alike, it will be zero. So when velocity of body is constant, ये आपके numericals में बहुत काम आएगा, अभी हम करने जा रहे हैं numericals भी. When velocity is constant, then acceleration is zero. Acceleration यहाँ पे हो जाएगी zero, अगर velocity आपकी constant है. Now another interesting case. Speed remains constant. अगर स्पीड कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी? अब दिमाग में क्वेश्चन आया, अगर मैंने कहा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन विल बी जीरो. बट नाउ आई एम सेइंग कांस्टेंट स्पीड, बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड, बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड, ऐसा कोई केस है बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड, स्टिल इट इज accelerating. Very interesting thing, huh? Body is having constant speed, still it is accelerating. Let's discuss the case. You all are aware about the circular motion. अब circular motion से आप सभी लोग aware हो. Suppose certain object is moving in a circular path. कोई गाड़ी हो सकती है, car, anything moving in a circular path with a constant speed. Of suppose कोई ऑब्जेक्ट ले लेते सिंपल सा, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है. स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट. नाउ व्हाट विल हैपन? एज आई एम सेइंग स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट. ओके, बट एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है, यह डेफिनेशन क्या बताती है? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी, यही बताती है। सो यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, ओके। क्या ये एक्सीलरेटेड मोशन है, ये जानने के लिए हमें जानना है क्या इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। लेट्स सी व्हाट इज वेलोसिटी। स्पीड इज कांस्टेंट, acceleration means that velocity should change. And what is velocity? Velocity क्या है? I am not asking formula. Velocity को एक और नाम से जानते हैं हम, V से velocity is equal to, हम क्या कहते हैं, velocity is equal to, अगर आपको याद होगा जब हमने velocity किया था, velocity is equal to speed with direction. Speed with direction, speed तो है पर साथ में उसकी direction भी है। अब यहाँ क्या हो रहा है, स्पीड भले ही चेंज नहीं हो रही है, स्पीड इज नॉट चेंजिंग, मैंने कहा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है वो, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रही है। एवरी पॉइंट डायरेक्शन इज चेंजिंग। कैसे? लुक, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल, वो चलता है, सीधा चलना चाहता है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट वांट्स टू मूव हियर, फोर्स लगी, उसमें एक टर्निंग एक्शन आ गया, अगेन ऑब्जेक्ट वांट्स टू मूव हियर, फोर्स लगी, टर्निंग एक्शन, ऑब्जेक्ट वांट टू मूव हियर, अगेन फोर्स इज अप्लाइड, विच फोर्स, ये भी आपको बताएंगे, दिस इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की ओर लग रही है। अगेन ऑब्जेक्ट वांट्स टू मूव, नेचुरल टेंडेंसी के ऑब्जेक्ट की टू हैव ए स्ट्रेट लाइन मोशन, लेकिन अगेन फोर्स, अगेन इट विल टर्न, अगेन इट वांट्स टू मूव, अगेन इट विल टर्न, अगेन इट वांट्स टू मूव लाइक दैट, अगेन इट विल हैव अ टर्न, मींस ऑलमोस्ट उसका सर्कुलर टर्न आ जाएगा। इससे मैं व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल टू यू पीपल, रीजन स्टूडेंट्स, आई वांट टू टेल दैट एट एवरी पॉइंट direction of motion is changing. At every point, direction of motion is changing. Direction of motion हर point पे बदल रहा है। So it means अगर direction of motion बदल रहा है, यानी speed with direction बदल रही है, इसका मतलब हुआ velocity बदल रही है। So therefore body in a circular motion moving with constant speed, let me write it here, body in a circular motion moving with constant speed is having accelerated motion. Therefore, what we conclude? Body in a circular motion with constant speed is having accelerated motion. Accelerated क्यों? क्योंकि भाई वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही थी, स्पीड विद डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, यानी मींस वेलोसिटी चेंज हो रही थी। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हम क्या कहते हैं? The motion is accelerated motion. Body in a circular motion with constant speed is having a accelerated motion. Reason? Speed with direction is velocity. Simple सा reason क्या लिखोगे? And in circular motion, direction is changing at every point. Direction is changing at every point. Therefore, it is accelerated motion. Yeah, this is accelerated motion. Now, what is uniform acceleration? You can see here now, if the velocity of an object changes by an equal amount, friends, this is very important, equal amount, चेंज तो हो रहा है पर कैसे? इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग, फ्री फॉल, वी कैन से इट फ्री फॉल, सम ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग, और मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग स्मूथली ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ से अगर कोई स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन से बॉडी रोल करती हुई आ रही है, देन आल्सो वी
कंसीडर इट, अदरवाइज ऐसा मोशन नेचर में होना बहुत टफ है, बट स्टिल दे आर समथिंग नियर टू दिस थिंग, ये इसके सो है नियर अबाउट है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर देम। एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सेम डेफिनेशन, बस चेंज कहाँ आएगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय एन, जहां पे इक्वल लिखा हुआ है यू हैव टू राइट अनइक्वल अमाउंट, दैट्स इट। इन यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, फ्रॉम हेयर इट इज विल बी अनइक्वल अमाउंट, सेम डेफिनेशन। एग्जांपल इज मोशन ऑफ अ बस लीविंग और एंटरिंग द बस स्टॉप, मोशन ऑफ अ बस लीविंग और एंटरिंग द बस स्टॉप, or you can say simply the motion of a car in crowded road, in a crowded road। ये हमने बहुत जगह एग्जांपल दिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो दिस इज आई थिंक क्लियर टू यू। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स का विषय, बिफोर वी प्रोसीड टू एनी न्यूमेरिकल, formula to be used is acceleration is rate of change of velocity v minus u upon t. Units you have to always keep in mind, meter per second square, unless if in the question some other units are asked, then only you have to write those units, otherwise you have to use this units only. ms minus 2 also you can write, meter per second square also you can write. If you write it in a single line, it should be meter per second, that is minus 2. R will be minus 2. Okay, now let's start with our numerical part. Now, you see in a question, bus starts from rest and attains a 40 km per hour and attains a velocity of 40 km per hour, or you can simply attains 40 km per hour velocity after 10 seconds. Okay, calculate the acceleration of the bus. Now they asked in kilometer per hour and also in meter per second square, so both ways you have to calculate it. How? What is given? Just imagine a certain bus starts from rest, it is at first rest and it started moving in a motion and gradually धीरे धीरे attains a velocity of 40 km per hour, or you can say 40 kmh minus 1 when time is 10 seconds and rest से हम time इसको 0 लेके चल रहे हैं। Okay, calculate the acceleration of the bus. So we have formula for acceleration, that is v minus u upon t. This is the formula for acceleration. Right? Now, what is velocity here? Final velocity. It attains a final velocity of 40 km per hour. What is initial velocity? Initial velocity is 0. Okay. What is the time? Time is 10 seconds. Time is 10 seconds. Watch carefully. Velocity is here 40 km per hour. Time is 10 seconds. And you have to find acceleration in kilometer per hour. Means अब हमें से किसमें, अब हमें कौन सी क्वांटिटी को बदलना होगा, टाइम को बदलना होगा कि वेलोसिटी को बदलना होगा, because they are asking acceleration should be in kilometer per hour. Velocity is already in kilometer per hour, but time is in seconds. Time seconds में है. Now what we have to do? Let's see. Now you have to convert this second 10 seconds into hours. T should be in hours. अब कैसे करेंगे? How we'll do this numerical? Formula आपके सामने है. But we have to change the time. Time की जो units हैं वो हमें बदलने पड़ेंगे क्योंकि किलोमीटर पर आवर में आपसे आंसर पूछा है. Okay, let me rub this question. Now what you will do? Very simple thing. Time is 10 seconds and you have to convert it into hours. In 1 hour there are how many minutes? 60 minutes. In 1 minute there is 60 seconds. Okay.
So in 1 hour, total number of seconds is 60 into 60. That is 3600 seconds. Now, let me rub this portion. Okay, I write here 3600 seconds. Or we can say 3600 seconds is equal to 1 hour. 1 second is equal to 1 upon 3600 hour, and 10 seconds equal to 1 upon 3600 into 10. 0 get cancelled. Means 10 seconds is now 10 seconds किसके बराबर आ गया? 10 seconds अब हमारे पास आ गया. Now 10 seconds is equal to 1 upon 360 hours. 10 seconds is equal to 1 upon 360 hours. ये क्लियर हो गया? Now एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहां से हम पुट करेंगे. एक्सेलरेशन था v माइनस यू, तो हमारी वेलोसिटी थी 40 माइनस 0. Now एक्सेलरेशन लेट कैलकुलेट. In place of t we will write 1 upon 360. So it is 1 will be there into 360. That comes out to be 40 into 360, because 40 minus 0 is 40. 40 into 360. That comes out to be 14400 kilometer per hour. I think up to here it's crystal clear to you. Here now it is 14400 kilometer per hour. Any problem up to here? I don't think so. So this is the first part of this numerical. If this is question number 1, this is the first part answer. That is 14400 kilometer per hour. Now what is the second part? Second part में पूछा है. You can just pause the video and note it down. Now what does it ask in the second part of the question? Now here you have to find the acceleration in meter per second, natural. Now again, you know 0, velocity here is 40 kilometer per hour. Whenever you have to convert kilometer per hour into meter per second, you have to multiply by 5 by 18. So here it is 200 upon 80. That is meter per second. Now time is also in seconds. 10 seconds. Right? Time is also here in 10 seconds. Now we'll move further. Here now acceleration is given by, let me write here. Acceleration is now same, v minus u upon t, that is 200 upon 18 minus 0 is 200 upon 18 only. In place of time you will write 1 upon 10. Now it is in seconds. 0 get cancelled out. It is 20 upon 18, which comes out to be 18 ones are 18. Again a 20 over there. Again 18 ones are 18. It comes out to be 1.1 ms minus 2. You can go for 1.11 also. So this is how we calculate it in meter per second. Got it? So this is the question number first. Now let's move to another questions. So एग्जाम में ये डिपेंड करता है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. हम यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था. फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर में आपको निकालना था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बस मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, अ बस is moving with a velocity of, how much velocity? Of 60 km per hour is brought to rest. Of 60 km per hour is brought to rest. कब? Brought to rest in 20 seconds. In 20 seconds. By applying brakes. By applying brakes. स्टूडेंट जब भी ये क्वेश्चन आएगा, जब बात होगी ब्रेक्स अप्लाई की,
रिमेंबर वन थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है, वेन एवर द थिंग अराइजेस कि हमने ब्रेक्स अप्लाई की, वहां पे क्या हो जाएगा, योर डीएक्सेलरेशन विल बी देयर, फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो के लगभग, जीरो के आसपास पहुंच जाएगी या इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाएगी। अगर वो प्रॉपरली रेस्ट पे आ जाती है बॉडी, तो इट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी वहां पे जीरो हो जाएगी। तो बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ब्रॉट टू रेस्ट इन 20 सेकंड्स बाय अप्लाइंग brakes. Find the acceleration. Find the acceleration. You have to find here the acceleration. Now solution. Here velocity is given to you, that is 60 km per hour, and final velocity is 0. Let us convert this 60 by multiplying it by 5 by 18. That comes out to be 300 upon 18 meter per second. Now here the time is 20 seconds. Find the acceleration. Here the acceleration is not there, it is a retardation, that will be negative value. How? Final minus initial. Initial is 300 upon 18 divided by your time, that is 20. It comes out to be minus 300 upon 18 into 20. It gets cancelled. Here it is now minus 15 upon 18. That comes out to be, when we just divide it, it is minus बाद में use करेंगे, 18 and 15. Point will be there. It will be 144. It comes out to be your 6. Here it is 60. Point is already there. It comes out to be 3. So it comes out to be minus 0.83 meter per second square. ms minus 2. This negative sign shows that retardation. जब भी ब्रेक की बात आए, whenever the brakes is applied, it means कि final velocity 0 हो जाएगी. Always remember this. Whenever the brakes, किसी भी numerical में अगर brakes वाली बात आएगी, तो definitely उसकी final velocity initial velocity से कम होगी. और अगर rest पे आ गई, तो final velocity 0 होगी. So it is clear to you. So next question we'll move. Observe it carefully. आपकी मर्जी है, यू कैन सॉल्व इट हेयर आल्सो, इट्स अप टू यू. एवरीवन हैज देयर ओन वे टू, यूनिक वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. जैसे आपने वैल्यू फाइंड करनी है, यू कैन यूज योर ओन मेथड, बट इट्स ऑलवेज इजी कि हम लास्ट में उसे सॉल्व करें. ओके, नाउ लेट्स मूव. Another question is a car is retarded by applying a brakes at a rate of 2 meter per second. पहले दे रखा हुआ है, a car is retarded पहले लिखा हुआ है by applying brakes. Okay, retarded by applying brakes at the rate of 2 ms minus 2. मीन्स आपको डीएक्सेलरेशन पहले दी रखी हुई है एट द रेट. ठीक है. इट इज फाइनली स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड, ये भी बता दिया. इट इज फाइनली स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड्स, ये भी बता दिया आपको. इट इज फाइनली स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड्स, ये 10 सेकेंड में स्टॉप हो गई है. फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, निकालना क्या है, फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी. फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है. वेरी सिंपल, दैट इज क्वेश्चन थर्ड. ओके, ऑलरेडी रिटार्डेशन दी है, मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी गिवन टू यू, दैट इज -2. इसकी वैल्यू गिवन है. नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हो, इसे रिटार्डेशन बोलते हैं. टाइम इज आल्सो गिवन 10 सेकेंड्स. अब रिटार्डेशन में मैंने क्या बताया था, जब रिटार्डेशन की बात होती है v इज 0 हो जाता है. और एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फार्मूला है v माइनस यू अपॉन टी. दिस यू नो, v माइनस यू अपॉन टी. नाउ इट इज गिवन a, मतलब डीएक्सेलरेशन आपको गिवन है -2. वी पुट द वैल्यूज, v विल बी 0, u इज योर -2. इट इज ऑलरेडी पूरी वैल्यू दी हुई है -u, that is your
u is your, you have to find, minus u you have to find, and in case of t, time is given 10. Again look, acceleration is -2, here velocity, final velocity 0, क्योंकि अब ब्रेक्स लग गई हैं, दोबारा वही बात आ गई, जब ब्रेक्स लगेंगी फाइनल वेलोसिटी 0, माइनस यू अपॉन, क्योंकि साथ में ये भी लिख दिया हुआ है कि वेलोसिटी कम नहीं हो रही है, इट इज फाइनली मोशन इज सीज्ड, सीज मतलब स्टॉप हो गई कार, सो 0 माइनस, दैट इज फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस यू अपॉन 10. You here you have to find u. What will be the value of u? Minus u equal to -20. That comes out to be u here, initial velocity here is, implies initial velocity comes out to be 20 meter per second. So this is your numerical third. Let's do one more numerical. So let's go for one more numerical. Another numerical is your, a driver applied the brakes. A driver applies, again सारे आपके numericals में brakes लग रही हैं, applies the brakes and slows down the, applies the brakes and slows down the velocity of the bus, slows down the velocity of the bus from, I think it's 80 km per hour, 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. In 5 seconds. Calculate the acceleration. Interesting question. So first and foremost thing is, we should know brakes लगी हैं, शुरू में वेलोसिटी कितनी थी, u कितना था 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर. तो अगर हम v माइनस यू फॉर्मूला बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी का, तो ये नेगेटिव में अपने आप आ जाएगा. 60 minus 80 will be minus 20, that is in negative. First let us convert this into meter per second. 80 into 5 by 18. Here also 60 into 5 by 18. 400 upon 18. This is 300 upon 18. Okay. Now acceleration formula is v minus u upon t. You know the value of v and you know the value of u. 300 upon 18 minus 400 upon 18 divided by, whole thing is divided by 5 seconds. Now this comes out to be minus 100 upon 18 into 5, that 5 20s are, now it is minus 20 upon 18, that comes out to be minus 1.1 ms minus 2. This is your retardation, this is your final, इसे एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा जहां जहां भी हमने ब्रेक्स वाली बात की वहां पे फाइनल वेलोसिटी कम हो जाती है. फाइनल वेलोसिटी इज व्हेनेवर ब्रेक्स शब्द आएगा, ब्रेक्स इज अप्लाइड, मींस वहां फाइनल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मींस इनिशियल वेलोसिटी से कम हो जाएगी, और अगर बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. सो आई होप ऑल these types of numericals are clear to you. Go through them thoroughly and precisely.